अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। वी नो दैट स्टूडेंट्स के एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ we can make this as a over x plus 1 plus bx plus c over x square minus x plus 1. Now multiplying both sides by x plus 1 into x square minus x plus 1, we get x square plus 1 is equal to a into x square minus x plus 1 plus bx plus c into x plus 1. Now multiplying ax square a into x ax plus a plus here bx into x bx square plus bx plus cx plus c. By taking x square and x common, we get x square plus 1 is equal to a plus b into x square plus b a plus c minus a into x plus a minus c. Now by taking x plus 1 is equal to 0, we get value of x which is minus 1. Now putting value of x is equal to minus 1 in equation 2, we get value of a which is 2 by 3. Now by comparing coefficients of x square of both sides, we get 1 is equal to a plus b, and we know that a is equal to 2 by 3. Put here, we get value of b which is 1 by 3. Now comparing constants of equation 3, so we get 1 is equal to a plus c, and we know that a is equal to 2 by 3. Put here, we get value of c which is 1 by 3. Now we have find the values of a, b and c. Now put values of a, b and c in equation 1. We get x square plus 1 over x plus 1 into x square minus x plus 1 is equal to 2 over 3 into x plus 1 plus x plus 1 over 3 into x square minus x plus 1. So क्वेश्चन मेरे 8 हो चुका है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज भी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।